हेलो 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 हेलो, वड़ा पाव तो खाया होगा, पाव भाजी भी खाई होगी, आई अज्यूम सो. इफ नॉट भैया, you have to check these out. The most popular street foods in India actually, okay, I would say. But अभी थोड़ा सा हटके से है ये, where I'm actually combining the two. I've never done it before, I promise you. लेकिन पहली बार कर रहा हूँ. Is I am actually making a पाव भाजी वड़ा पाव. यानी कि वड़ा पाव वही है, लेकिन जो फिलिंग है ना, वो इंस्पायर्ड बाय द पाव भाजी. लेट्स स्टार्ट कुकिंग. तो पहले एक मिक्सचर बना देते हैं. सो आई हैव गॉट अबाउट 3 or 4 मीडियम साइज ग्रेटेड पोटैटोज हियर, और इसको हम फ्राई करेंगे माय फेवरेट अल्टीमेट इमामी हेल्थी एंड टेस्टी Ultralite Soyabean Oil. No chip, beautiful, no absorption, and also nutrient flavor, and I love it. Okay, थोड़ी सी अदरक, इसको हम स्लाइस कर देते हैं, and I'm taking a little bit of garlic also. Okay, so इसको हम lovely. और फिर जो चिलीज जो है ना, उसको भी रफली चॉप कर दिया. So I'm going to literally smash this and add it into my mixture just to give that whole rustic kind of feel going on here. Namak. Beautiful. तो इसको हम स्मैश कर देते हैं, अदरक लहसुन और मिर्ची को. Okay, because you want nice pieces of this whole thing coming, and this is exactly how that whole center of a vada tastes like. It's just mind blowing. Okay, चलो ये हो गया. अब first things first, तड़का, right? Okay, I have my कड़ी पत्ता over here also, beautiful, nice. तो अब ये राई क्रैक हो रही है, उसके बाद हम डालेंगे हमारा अदरक लहसुन और मिर्ची का मिश्रण और मिक्सचर. फिर हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी मंत्रा का असाफोटीडा, यानी कि हिंग. ओके, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट. तड़का हो गया. अभी हम डालेंगे इसमें फाइनली चॉप ग्रीन बीन्स एंड देन सम फाइनली चॉप कैरेट. इसको आई मीन हल्का सा पकाना है हमें. ओके, थोड़ा सा ज्यादा नहीं. ओके, फिर अभी हम डालेंगे इसमें ग्रीन पीस, थोड़े से मटर. नेक्स्ट हमारा पाव भाजी मसाला, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट प्रोडक्ट. बिल्कुल जिपलॉक बैग में 6 months, 7 months, 8 months, नो प्रॉब्लम. हाँ, फ्रिज में अच्छी तरह रख दो. तो थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल देते हैं इसमें, एंड वी गोना गिव दिस अ नाइस मिक्स. अभी हम डालेंगे हमारे आलू. लवली. नमक, थोड़ी सी हल्दी. ओके, नॉट टू मच. ब्यूटीफुल. नाउ वी गोना गिव दिस अ नाइस मिक्स. और बिल्कुल हमारे पाव भाजी स्टाइल का वड़ा पाव रेडी होने जा रहे हैं. यू नो, दिस इज अ वेरी यूनिक रेसिपी, यू काइंड ऑफ लव इट. ओके, ब्यूटीफुल. तो अभी हम इसे मिक्स कर देते हैं ऐसी तरह. ऑल द स्पाइसेस आर कमिंग टुगेदर, ऑल द वेजिटेबल्स आर कमिंग टुगेदर. अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं. ओके, एंड देन वी मेक सम नाइस बॉल्स. ब्यूटीफुल. तो अभी हम इसे यहाँ पर डाल देते हैं, थोड़ा सा कूल करेंगे. तब तक हम बनाएंगे इसका वड़ा पाव का बैटर, और फिर हमारी फैंटास्टिक ग्रीन चटनी. फॉर द वड़ा पाव बैटर, I've got about a cup and a half of besan here. I've got half a cup of a little bit of rice flour inside. It makes it nice and crispy. Then in this, we're going to be adding a little bit of bicarbonate of soda in here, just to make it a little light. Namak, bilkul swad anusar. I'm going to add a little bit of red chili powder. I'm going to be adding
a little bit of my haldi powder. Abhi, I'm going to whisk this with some water, with some cold water or water at room temperature. And the idea is to make a not very thin and a not a very thick batter. Okay? इसको हम whisk करके रख देते हैं. Now this looks a little thick to me. और थोड़ा और पानी. Okay? Perfect. I've got a fantastic, beautiful batter here. Coating consistency उसको बोलते हैं. The moment you put a spoon in and you take it out, when it coats the spoon, that's called a coating consistency. Chalo, batter is done. Now, batter is ready, mixture is ready, but it's still warm. By the time we are ready, with the green chutney, boom, everything is ready. So, if you go to see, it is all about time management. Green chutney, जितनी भी fresh हो ना, बस वही है. तो coriander, about 1 cup, along with your stems and all, because they have a lovely flavor. I put a little, I mean, you can add mint as well into it, but in Maharashtra, they tend to eat a lot of coriander by itself. Adrak ko thode se, okay. I'm adding a little bit of ginger in this. I'm adding also some green chilies as well. Tikhi chahiye yaar, I mean, samjhi baat hai. I like to add a little bit of garlic in my chutney. Okay, choice आपकी है, but I like to add it. फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी नमक, okay, and then some lemon juice. Beautiful, for about half a lemon, yeah. थोड़ा सा पानी, and then what I do, मेरा जो hack है, I like to use some ice cubes, okay. तो क्या होता है, जो temperature इसका regulate हो जाता है, the chutney stays really nice and chilled, and also it retains its color, which is one very important thing. That color, appearance, and taste. Definitely, you have to do it properly. Okay. Now you know what I mean. A really nice, beautiful color. It's a little thin because we just have to spread it. Doesn't have to be really thick. Okay. So हमारी beautiful, lovely green chutney is ready. And normally when you go to a vada pav wala, the chutney is always thin. Because you know why? They have to lovely spread the chutney with the butter if you want to. And we start making our vada pav. Lovely. So we are looking at about around this size. Okay, I would say about what? 50 grams, 60 grams. Yeah. And you know what? I don't really care if the vada pavs are large, because you know what? I just love vada pav. So the temperature of the oil is pretty important. Now I'm just going to drop some in here. Beautiful. So looking at this, आप देखेंगे काफी गर्म हो गया. अभी मैं इसे थोड़ा सा धीमी आंच पे डालूंगा. Okay. Next, अभी हम वड़े को इसमें ड्रॉप करेंगे. Beautiful. Look at that. And then we slowly, beautifully cook these. The batter is not too thick, okay? You've got a really nice, beautifully coated, nice and crispy vada pavs. And this is the other tempura of vada pav, as we call it, which is one of the best things you eat in a vada pav, which I'm going to be serving at this. So once these are ready, we're just going to push these on the side. Lovely. तो हमारी वड़ा पाव भाजी रेडी है और पाव भाजी वड़ा रेडी. ओके, पाव भाजी वड़ा, दैट्स द राइट वन. So a unique mix of my two top favorite foods, pav bhaji and vada pav, comes together in this beautiful dish right here for you. My one and only Pav Bhaji Vada. Enjoy.